दिस इज गुड। मैम मैम आगे आ जाइए मैम। दो लोग पकड़ ले। थोड़ा सा आगे आ जाइए। यस आराम से भाई, आराम से। सर लुकिए सर ये शॉट सर, दिस साइड सर, ऑन योर राइट। दिल्ली तमिल इधर से उधर इधर सबके सामने ये चिदम्बरम साइड ये चिदम्बरम से है। क्या है ये क्या है? अरे ये क्या है? ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ எடுத்துட்டு சார் ஃபிளாஷ் வர மாட்டேங்குது धक्के मत दो यार, कम कम दो भाई धक्के। डीजी मैडम अंदर आइए, फ्रेम के अंदर आइए मैडम। थोड़ा डीजी मैडम अंदर आइए। मैडम मैं अतिथिगण से अनुरोध करना चाहूंगी कि ब्रिंगिंग बैक आवर हेरिटेज रिटर्न ऑफ तमिलनाडु एंटीक्विटीज इस पुस्तक का आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर विमोचन करें। अधिकांश प्रतिमाएं उत्कृष्ट चोल विजयनगर काल की हैं, जो कांस्य में बनी है तथा शिल्प कौशल और धातु विज्ञान की अभूतपूर्व शैली को प्रदर्शित करती है। दो प्रस्तर में भव्य रूप से उकेरी गई है प्रतिमाएं विजयनगर काल की हैं। उस 10 पुरावशेषों में से 4 ऑस्ट्रेलिया से तथा 6 संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त की गई है। ये सभी मूर्तियां आइडल दिन तमिलनाडु की शेष प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें आज इस भव्य समारोह में तमिलनाडु सरकार को सौंपा जाना है। और अब मैं सभी माननीय मंत्रीगण से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे आइडल दिन तमिलनाडु के अधिकारियों को औपचारिक रूप से सभी पुरावशेष को हैंड ओवर करें। राज्य मंत्री संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर मुदम जी, केंद्रीय मंत्री फिशरीज, डेयरी और इंफॉर्मेशन एंड प्रोपार, विद्यावती जी डायरेक्टर जनरल ASI, हमारे शैलेंद्र बाबू जी DGP तमिलनाडु, आलोक त्रिपाठी ADG ASI,
हमारे डॉक्टर जयंत मुरली, सत्यनारायण जोशी, अर्जुन मिश्रा जी जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं तमिलनाडु हाउस के, और इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय सज्जनों, मातृशक्ति और पत्रकारों, ये आज का जो कार्यक्रम है, जो हमारे ऐसी कलाकृतियां, ऐसी मूर्तियां जो अनैतिक तरीके से कुछ लोग ले गए विदेशों में, उसको वापस लाने का भारत सरकार का प्रयास, जो मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार, जिसके 8 साल 30 मई को ही पूरे हुए, आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं उसमें नेशन फर्स्ट है। अभी मीनाक्षी जी ठीक ही कह रही थी कि 2013 तक ऐसी मूर्तियां जो चोरी होकर बाहर चली गई, वो 13 ही मूर्तियां वापस आई, और 14 के बाद 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, तब से लेकर के अब तक 220। Now you see the scale and speed. Now you have to judge. और खाली ये मूर्तियां चोरी हो गई, वापस लाए, ये विषय नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें आप किसी योजना को उठा लीजिए और उसकी स्केल को मापिए और स्पीड को मापिए। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि इस देश में कच्चे मकानों को पक्के मकान बनाने की योजना थी, जिसका नाम था इंदिरा आवास। एक ग्राम पंचायत में 1 या 2 मकान बनते थे। 2014 में जैसे प्रधानमंत्री आते हैं नरेंद्र मोदी जी, स्केल बदला और स्पीड बदली। 2 और 3 मकान किसी ग्राम पंचायत में बन रहे थे, रुपए 40 और 45 हजार मिल रहे थे। अब कहीं पे राज्य सरकारों की सहयोग से 2 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2.5 लाख तक का मकान बन रहा है, और एक ग्राम पंचायत में 100, 200, 300 तक मकान बन गए। तो ये है काम करने की स्पीड और स्केल। ऐसा ही इसमें मूर्तियां चोरी हो गई, कुछ ने देखा ही नहीं, किसी ने इसमें ध्यान ही नहीं दिया। अभी हमारे शैलेंद्र बाबू जी बता रहे थे कि तमिलनाडु में आइडल मिनिस्ट्री का महकमा है, अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय से काम कर रहे हैं अपन सब जानते हैं कि इसके बावजूद भी 13 एंटीग्विटी ही बाहर से आ पाई है, और मोदी जी के आने के बाद 228। यू सी द डिफरेंस। ये काम करने का एक जो तरीका प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि नेशन फर्स्ट। हमारे देश की कोई भी चीज ऐसी अमूल्य कृति जो बाहर चली गई अनैतिक तरीके से, लोग चुरा के ले गए, ऐसे साधनों से ले गए, पता ही नहीं चला, उनको वापस लाने का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम हाथ में लिया। और सही कहा भी कि आजादी के अमृत महोत्सव में ये भी एक कार्यक्रम है कि हमारी जो विरासत है, हमारा जो हेरिटेज है, उसको भी वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। और इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम है। मैं जितने भी लोग आए हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ये 10 एंटीग्विटीज है जो यहाँ ASI ने अपना
जो इस तरह का एक सेक्शन बना रखा जिसमें रखे हुए थे सुरक्षित आने के बाद, और जब जो कोई स्टेट या कोई क्लेम करता है हमारी है, उसके बाद भारत सरकार उनको समान वापस लौटाने का काम करती है। मैं ये ऐसा दूसरा फंक्शन है जिसमें सम्मिलित हुआ हूँ। एक पहले फंक्शन हुआ अन्नपूर्णा देवी का, जो बनारस से एक मूर्ति अन्नपूर्णा देवी की कनाडा चली गई थी और उसको वापस लाया गया। उसमें सभी भारत सरकार और सभी एएसआई और सभी का सहयोग था, मिशन का भी सहयोग था। और उसके बाद वो वापस जब आए तो दिल्ली में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ था। और उसके बाद हमें भी सौभाग्य मिला कि मैं उत्तर प्रदेश का उस समय सह प्रभारी था, तो एक जगह अन्नपूर्णा देवी मूर्ति का स्वागत करने का अवसर मिला। उसके बाद बनारस में जहाँ मूर्ति स्थापित हुई, वहाँ जब हम गए उसको देखने, तो मैं अचरज से हैरानी से आपको कह सकता हूँ कि बाबा विश्वनाथ के जितने लोग दर्शन कर रहे थे, अन्नपूर्णा देवी के लोग उतने ही लोग दर्शन कर रहे थे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। ये हमारी कलाकृतियों का वापस स्थापित होने के बाद जो एक महत्ता और सम्मान मिलता है, मुझे लगता है इसी तरह का सम्मान हमारे इन एंटीक्विटीज को भी मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Minister, Ministry of Culture and Parliament Affairs, Sri Arjun Meghwal ji, Honorable Minister, Ministry of Culture and External Affairs, and the leading advocate, Srimati M.Lekhi ji, Honorable Minister, Fisheries and Animal Husbandry, Dairy, Information and Broadcasting, my friend Dr. L. Murugan ji, today's function, representative from Tamil Nadu government, Dr. Sri Shailendra Babu, DGP, from government of Tamil Nadu, Srimati Vidyavati ji, Director General, Archaeology Survey of India, Ministry of Culture, Government of India. Sri Alok Tripathi, Additional Director General, Archaeology Survey of India. And officers of Ministry of Culture, Government of India, Ministry of External Affairs, State Government of Tamil Nadu, today it gives me immense pleasure to be here in this event where we are bringing our gods to homeland. Over the last 8 years, the Government of India, under leadership of the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, we have taken several steps to preserve our ancient civilization and ethos, protect our culture and spiritual heritage, and to propagate Indian knowledge, systems and traditions across the world. Bringing our gods to home is one of such initiative that
rooted in preserving, promoting, and propagating our heritage. The initiative is led from the front of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Friends, Prime Minister Narendra Modi ji has made the return of our murtis and antiquities as one of the prime objectives of the overseas travel. These antiquities have been returned from foreign countries, including the United States of America, United Kingdom, the Netherlands, France, Canada, Germany, and Singapore, etc. Our Prime Minister personally relationships and warm ties with world leaders from all these countries have led to the respective nations swiftly identifying and stolen antiquities, sustained and persuasion and cooperation till their return. Therefore, all the credit goes to our Prime Minister Narendra Modi ji. He has not only made efforts to help retrieve these antiquities. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji also personally carried them from the different countries within during his official tours from abroad. During the recent visit, our Prime Minister to the USA, 157 antiquities were returned to India, is being the largest single collection India got back so far. Friends, you will be aware that over the last 8 years, just now my ministry colleagues also informed, last 8 years the government has brought back 228 heritage objects. Only 13 antiquities were brought back to India between independence to 2013. Friends, the figures speak for themselves, respect and reflect the importance this government attaches to our heritage. With the sustained effort of the Government of India and 228 antiquities being brought back since 2014, the total number has now become 241. Friends, India is a continuously living civilization. Therefore, our art, culture and heritage is not just available for viewing the museums, but can be witnessed in our day-to-day activities. We protect nature, we respect nature, that is our culture. We perform puja to nature, we number of natures, the festivals to celebrate, the gods we worship, the pujas we perform, the food we eat, the dance and music performance appreciated. These are all a testimony to our ancient civilization roots from further. Keeping this in mind, our approach has been to continuously integrate our culture into our life rather than to position them in museums. Therefore, there is an attempt to restore
our stolen heritage. It is to place it was taken from. It is only appreciate these ideals and antiquities wherever possible are installed back at the place they were stolen from. Friends, they do not deserve to languish in the warehouses of museums. Our history belongs to its geography. You would recall the ideal of goddess Annapurna Devi was returned from abroad. It's a rightful place at our cultural city of Kashi Vishwanath Temple, Varanasi, UP, after 108 years. This is a step in this direction, in the above mentioned direction. Now, there is a plan to continue returning heritage objects to their locations wherever feasible. This program is a first in many such public events that will be held in continuation with the respective state government and institutions. Today, I would like to congratulate all the officials of Archaeology Survey of India and every individual who has been working on protecting and retrieving our stolen antiquities. I would also like to thank Minister of External Affairs for their tireless efforts. Friends, today it is a matter of pride that we are returning to Tamil Nadu a total of 10 antiquities from Australia and the United States of America. Out of these 10 antiquities, 4 were retrieved from Australia in the years of 22. 6 were brought back from USA. Friends, these 10 antiquities, including 2 Dwarapalas, stone sculptures from Mudraswara Madiyar Temple, Tirunelveli district, Tamil Nadu, 1 dancing Natraja in bronze from Mariamman Temple, Tanjavur, Tamil Nadu, 1 sculpture from Kankalamurti and a sculpture of Nandikeshwara from Narsingadar Swami Temple, Tirunelveli district, Tamil Nadu. A 4-armed Vishnu of the 12th century and a sculpture Devi Parvati from Arulmigu, Varadaraja Perumal Temple, Ariyalur district, Tamil Nadu. A sculpture from Shiva Parvati Devi from Vandega Natha Temple, Tanjavur district, Tamil Nadu Temple. 2 sculptures of standing Sambhadar from Shivaneshwar Temple, Nagapattanam district, Tamil Nadu. I would also like to thank the Government of United States of America and the Department of Homeland Security USA for facilitating to the ideals returned from their country. I truly believe that the retrieval of antiquities is a matter of pride for us, but at the same time a responsibility towards our homeland. It is a matter of pride that our continuous efforts have started
to bear fruit, and we now have a steady retrieval of our heritage from abroad. India is celebrating the 75 years of independence through Azad Ka Amrit Mahotsav. India 100 years of independence celebrations. Enter coming 25 years in 2047. Our Prime Minister will call regularly. These are coming 25 years from India. This is a Amrit call. This is a Amrit time, golden time. This is an opportunity to take the lead as a global protector of indigenous culture, traditions and heritage. This will also allow an open and honest conservation and decolonization to take place. I once again thank all the persons and stakeholders for participating one of the historical this event, and also I congratulate media friends, those who are covering this program. Once again, and thanks to everybody, friends and elders and departmental officers. Thank you very much. Metal, bronze, or stone, that they represent the faith and power of civilization. A few centuries ago, people who built it put their heart and soul into it, and people who kept worshipping them obviously had their faith in them, are not the ones or cannot be the ones stealing them for alternate purposes. The ones obviously who are stealing them also indicate the way lack of faith, lack of pride in one's own heritage and culture, and valuing things not for the worthiness they have, but valuing things on the basis of material cost they can fetch in international market. That's what has happened. The fortunate part is UNESCO also is very keenly working on these issues and is helping us and coordinating with us and also making people aware across the globe that these artifacts are stolen and they are not the properties which the way property or exquisite antiquities to be looked at, but rather than property which bears the faith of millions of people over a few centuries. I'm very happy that today central government under the leadership of our Honorable XCM Mr. G.Kishanji has taken a step forward, and of course the overall supervision and guidance remains that of the Prime Minister. And Honorable Prime Minister on his recent visit to US was the one who further facilitated the process of bringing back a lot of these antiquities. And today we are handing it over through the secretary from Tamil Nadu. I just hope and pray they are kept as safe, knowing their worth and knowing how people greedily look over these pieces, not necessarily out of faith and cultural affinity, but sheer financial worth of these antiquities. We are able to protect them as Indians and take pride in the Indian heritage, and thus celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, that with Azadi comes the pride, with Azadi comes the knowledge, with Azadi comes the freedom of being suppressed and oppressed by cultures which are alien to us. Getting freedom from that thought is what freedom is all about. Wish you all a very happy Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is another celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. And of course, at the political level, I must say, this is cooperation, this is cooperative federalism, which we are indicating through the central government, which is working with the Tamil Nadu government and restoring these pieces to the place where they belong. Thank you very much.